Assalamu alaikum class 5. I hope you all are doing great. So class, today is 28th of April 2021 and the day is Wednesday. Fine? Okay. So yesterday we studied about the concept of division of 6-digit numbers by two non-zero numbers. Isn't class? यही पढ़ा था ना हम लोगों ने? ओके, सो आई हैव एन एग्जाम्पल. सिक्स 364 divided by 18. Okay, 629 364 divided by 18. So in this, what is the divisor class? Divisor क्या होता है? Yes, Abdullah, you tell me what is divisor in this? Very good. जिससे हम divide कर रहे होते हैं. So in this we have divisor is 18. Fine. And what is dividend class? What is dividend? Very good. जिस पर हम divide कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस पे working हो रही होती है, is known as dividend. So the sum is 629 364 is inside the division and 18 is outside the division. Fine class? Okay. So I will read the table of 18. Isn't class? So as you look, the first digit is 6, which is smaller than outside the division number, which is 18. So I will take two digit number, which is 62. So 18 two times. 2 8 times 16, 1 carry. 2 1 times 2 and 3, 36, which is 2 4. So 18 3 times. 3 8 times 24 and 2 carry. 3 1 times 3, 4 5, 54. So I will take 3 times 54. Okay class? Now what is the next step? Yes Abu Bakr, you tell me what is the next step? Very good. We will subtract. हम यहाँ पे इसको subtract करेंगे. So 12 4 times 12 minus 4 is 8. Now and 5 minus यहाँ पे क्या था? 5 remaining. So 5 minus 5 is 0. And this 9 as it is 89. Now 18. Now 18. I will read the table of 18 again. 18 4 times. 4 8 times. 32 3 carry. 4 1 times 4 5 6 7 72. It is quite near to 89, so I will write 4 72. Again subtract करूँगी. 9 minus 2 is 7 and 8 minus 7 is 1. Okay class? So if you look this, you have a two digit number and outside the division you have a divisor which is 18. So divisor is greater and this number is smaller. So I will write 3 below there. Fine. So on the basis of this, I will. So class, I will write 3 below there. Fine. Now I will read the table of 18 again, which is 18 5 times करके देख लेते हैं. 5 18 times 5 44 carry. 5 1 times 5
12, 120. अभी भी क्या है, टू फार है. सो 18 9 टाइम्स कर लेते हैं. 9 8 टाइम्स 72, 7 यहाँ, 9 1 टाइम्स 9, 10 11 12 13 14 15 16, 162. So this is quite near to 173. So 18 9 times 162. Now the next step is to subtract. 3 minus 2 is 1, 7 minus 6 is 1. Now I will bring down the number which is 6. Okay? Now 18 6 times कर लेते हैं. 6 8 times is 48. 4 carry. 6 1 times 6 7 8 9 10. So it is near to 1016. So 3 4 9 6. 18 6 times 108. Fine class? Okay. So 16 I will take a carry from the next number which is 1. So this number will become 16 and 16 minus 8 is 8. And this 4 as it is. 84. Now 18 4 times 32, 4 1 times 4 और ये 7, 72. Okay, 72. Next step is subtract. 4 minus 2 is 2. Okay class, 4 minus 2 is 2 and 8 minus 1 is 12. So remainder is 12. Okay? So the way to write is solution 3496. 3496, 4 times 72, remainder 12. This is the way to write this solution. So class, I hope this is all clear to you. Now I am going forward to word problems from exercise number 1C. Fine. So word problems from this exercise will be based on basically multiplication and division. Fine. Page number 16. Question number 1, which is Jumbo Fancy Store wants to place an order. Jumbo Fancy Store place an order for candles. Store wants to place an order for candles. Okay? If one box contains 144 candles, how many boxes must the shop order must the shop order
1080 candles. So class, as I told you some of instructions of word problems. So who will tell me what are the instructions of word problems? Yes, Fatma, you tell me. Very good. To solve word problems, we have some instructions to follow. The first is to read. Fine, read. Now I am going to read, which is Jumbo Fancy Store wants to place an order for candles. If one box contains 144 candles, how many boxes must the shop order for a stock of 1080 candles? Fine. Now, the second instruction of word problem is to understand. Isn't class? Huzaifa? Yes. Now, अब आपको इसमें से क्या समझ आ रहा है क्लास? एक जंबो फैंसी स्टोर है जो कि जिसने कैंडल्स का जो है ऑर्डर प्लेस करना चाहता था वो, और उसने कहा कि अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हैं तो आपने बताने कि 1080 कैंडल्स कितना स्टॉक जो है वो बॉक्सेस में, कितने बॉक्सेस में जो है वो शॉप से ऑर्डर प्लेस होगा. ठीक है. सो हम इसमें क्या करेंगे? हम डिवाइड करना चाह रहे हैं ना. अगर एक बॉक्स में 144 है तो हमने अगर 1080 कैंडल्स को प्लेस करना है, उसका ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें? वेरी गुड, वी विल डिवाइड इन दिस. क्यों डिवाइड कर रहे हैं? कि हमने जो है इतनी कैंडल्स का बताना है ना. अगर एक बॉक्स में आपके पास 144 है, so we will write one box equals to 144 candles. So and we have to find this 1080 candles. So इसके लिए आप क्या करेंगे? We will find one box. So उसके लिए क्या हो जाएगा? 1080 divided by 144. Okay, 1080 divided by 144. This is how we can solve. हमने एक का फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे. लेट्स डिवाइड हियर 100,080. दिस इज डिविडेंड और वर्किंग इसके ऊपर होगी. सो वी विल राइट लाइक दिस. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 by 144 5 times. 50 times 20 to carry, 54 times 20 to प्लस करेंगे तो 22, 51 times 5 and 6 720. So class 720. अगर आप देखो मैं 3 डिजिट लेती हूँ तो वो तो इससे स्मॉल होगा, तो आई विल टेक 4 डिजिट एट अ टाइम. So 1000 is so 720 is nearer to 1000. No. So I will multiply by 6. 6 4 times 24 to carry, 6 4 times 24 and ये 26. 6 1 times 6 7 8 864. अब 7 से भी करके देख लेते हैं हम लोग. 7 4 times 28 to carry, 7 4 times 28 और ये 30. 7 1 times 7 8 9 10. So this is greater than 1000. So I will take 6 times. 6 times 8 64. Okay. Now the next step is to subtract class. So जब हम subtract करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
144. 9 minus 4 is 5, 9 minus 6 is 3, and 9 minus 8 is 1. 135 is smaller than 144, so I will take 8 below here. Okay, now this is 4-digit number, so it is easily to divide, because divisor जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, और डिविडेंड अब डिवाइजर जो है वो छोटा है और डिविडेंड जो है वो ग्रेटर है, सो इट इज इजीली टू डिवाइड. नाउ आई विल रीड द टेबल ऑफ 144 बाय 9 से कर लेते हैं. 7 टाइम्स 1008 आया था, सो 9 4 टाइम्स 36, 9 4 टाइम्स 36, 37 38 39, 3 9 1 times 9 10 11 12. It is quite near to this, so 9 times 1 2 9 6. Okay, now in next step I will subtract. 8 minus 6 is 2, 5 minus 9 subtract हो सकता है? No, so I will take carry from the next, which is 15 minus 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Subtract कितने करने हैं हमने? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And how many are left, class? 1 2 3 4 5 6. 6. Fine. 6. Now this 0, I will take this 0 below here. Now I have 620. So 144 multiply by 5. 720. So class, I have 136 and I bring down 8 here. Now I will read the table of 144 to make the number nearest to this. So I will read the table which is 144 9 times 1296. And in the end I got 720. Now I will again read the table of 144. So 720, 144 5 times 720. So class, in the end I have total boxes is 695. Total number of boxes are 695. Okay class. Now I am going to revise. Repeat. Jumbo Fancy Store wants to place an order for candles. If one box contains 144 candles, how many? The boxes must shop order for a stock of 1080 candles. So क्या करेंगे, अगर एक बॉक्स में 144 हैं तो हमने इतनी कैंडल्स बतानी है कितने बॉक्सेस में होगी. So we will just divide by 144. ओके, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉक्सेस. हमारे पास अगर कैंडल्स जो हैं वो 144 एक बॉक्स में हैं, तो हमने क्या बताना है कि कितने बॉक्सेस जो हैं वो स्टॉक होके उस शॉप के ऑर्डर से जाएंगी. ऑर्डर होगा उस स्टॉक कैंडल्स के स्टॉक का, विच इज़ 1080 कैंडल्स. तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, एंड वी गेट 695 in the end. So total number of boxes are 695. Fine. 695. This is how we can solve word problems. You have to solve question number 1 and 2 on your notebook. Okay class. So this is all. If you find any difficulty related to this, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.